Ladies and gentlemen, I welcome you all to the Q2FY24 post-earnings conference call of Jyoti Resins Adhesives Ltd. Today on the call from the management side, we have with us Mr. Utkarsh Patel, Managing Director. As a standard disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements which may involve risk and uncertainties. Also, this is a reminder that this call is being recorded. I would now request Mr. Patel to detail us about the performance highlights for the quarter that went by, your plans and visions for the coming quarter and years, post which we will open the floor for Q&A. Over to you, sir. Utkarshji, I invite you to give your opening comments. Thank you, Vinayji. Good afternoon, everybody. Welcome to quarter 2 con call. सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे हमारे वर्किंग पे इतना ट्रस्ट किया and you have invested in our company, and we like to take this journey forward with all of you. Yes, of course, Vinayji, quarter 2 was challenging because of due to maybe the monsoon seasons and festival seasons. But anyhow, we maintain good profit margins. And yes, about as I have explained, for the next 3-year journey, we are planning with a good top line with a good EBITDA margin. And I want to introduce, I delighted to share with you that Mr. Milan Thakkar has joined us as a COO, and he has 20 years of experience in the field. Milan Thakkar, can you please introduce yourself? Good afternoon. Hello, everybody. Okay, firstly, excited to be on board. Thank you, Utkarsh bhai, for putting your trust in me. And, I'm sure with your vision, we will take this journey to the next level. Looks very, very promising, way forward and way ahead. My background, my name is Milan Thakkar. I've spent 20 years in industry, in the allied industries. And my last assignment was, I was a CEO for a company called Wallplast, where I was driving the B2B and the B2C business. I spent 7 years with Wallplast and gave them 300% growth in my 7 years, despite RERA, COVID, Notebandi, all the challenges. And I hope I will do much more. And I pray to the Almighty and Utkarshji to give me guidance to take his vision to the next level. So that's a little bit about me. I look forward to working with all of you guys and growing together and realizing the promoter's vision and taking this journey way forward. Thank you so much. Thank you, Utkarshji. Thank you, Milan. We will open the floor for questions now. We have uploaded the investor presentation, so all of you would have gone through it. We are happy to take questions. Please use the option of raise hand to ask a question. Yes, Manoj, you can go ahead and ask your question. Hello. Am I audible? Yes, yes. First of all, let me welcome Mr. Thakkar as a CEO of the company. Looking forward to work closely with them as an investor. And Utkarsh ji, namaste. आपको पहले तो मैं सबसे पहले आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बहुत मुश्किल समय में भी हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन बनाकर रखा। मेरे 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि पिछले 5 क्वार्टर से अपना टॉप लाइन नहीं आ रहा है, तो इसका क्या कारण है? मतलब वी आर अराउंड 61 crore, 62, in the same range we have been there. Though we have been registering profit, but अपना सेल्स का जो टॉप लाइन है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण है? Particularly when we have, despite getting into UP and Delhi state, I thought that this quarter we would have some better top line. So this is my first query.
Should I raise another query or one by one I should come? So we can start with this query I think first. Raji, please go. yes. You are very right that our top line is maintained is same as per last two quarters. But I like to share with you that as we are in domestic retail segments, ऑल ओवर देखने जाए तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे जब बात करें तो बिकॉज ऑफ द रिसेशन पीरियड इनटू यूएस एंड चाइना बट दैट इज गुड एट दैट व्यू वे हम डोमेस्टिक पेनेट्रेट हुए हैं सो वो इफेक्ट हमारा उसमें नहीं है बट डोमेस्टिक मार्केट में कैसा है कि जो हमने फोकस किया है वो एग्जिस्टिंग टेरिटरी पे हमने ज्यादा पेनेट्रेशन करने में फोकस किया है एंड इफ अबाउट यूपी एंड दिल्ली स्टेट्स तो वी जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड दैट तो वहाँ पे हमने हमारी प्रोडक्ट का प्लेसमेंट्स हमारी प्रोडक्ट का अवेयरनेस वो प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं एंड यस ऑफ कोर्स बाकी के जो अदर स्टेट्स है जहाँ पे हम ज्यादा हमारी टॉप लाइन बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए ही हमने हमारे प्लान्स शुरू कर दिए हैं जैसा आप देख रहे हैं कि एज मिस्टर मिलन टक्कर हैज जॉइंड अस सो ही विल आल्सो गिव हिज एक्सपीरियंस टू दिस जर्नी और उनके एक्सपीरियंस से उनके गाइडेंस से भी आगे हमको कई सारे जो अपने जो स्टेट्स है वहाँ पे डीप पेनिट्रेशन मिलेगा ग्रोथ मिलेंगे एंड यस ऑफ कोर्स वी हैव मोर फोकस फॉर द कारपेंटर मीट्स गैदरिंग्स डीलर मीट्स सो यहाँ पे हम ऐसा चाहते हैं कि ना सिर्फ प्राइमरी सेल बढ़े लेकिन जो हमारी प्रोडक्ट है वो हम कारपेंटर के एंड जो हमारे यूजर्स है इन्फ्लुएंसर्स है उसके बॉटम लेवल तक जाना चाहते हैं और इसके लिए हमारी जर्नी में काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं तो शायद यही रीजन है कि जहाँ पे हम इतने जल्दी से एज अ प्राइमरी सेल पे ग्रो नहीं हो पा रहे बट डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट ईयर और 2 इयर्स के स्पान में वो रिजल्ट अपने को अलग से दिखेगा टॉप लाइन बेस पे उत्कर्ष जी दूसरा मेरा ये प्रश्न था कि अपने पास इतना सारा कैश पड़ा हुआ है तो अपन इसको मेरे ख्याल से बैंक एफडी वगैरह किया वो सब ठीक है बट अपन आपको लगता नहीं कि बहुत सारे जो छोटे छोटे प्लेयर्स है अपने सेम फील्ड में सेम बिजनेसेस में उनको अपन एक्वायर करने का वी शुड कंटेम्पलेट टू वी शुड इवेलुएट इफ वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी वी शुड ट्राई टू टेक सम ऑफ द कंपनी and acquire them. Are we thinking in that line, Utkarsh ji? See, right now we are not in hurry to take any decisions that maybe disturb our existing structure. So you are very right. आगे जाके हमारे plans बिल्कुल रहेंगे अगर कोई अच्छी opportunity हमको मिलती है तो definitely we'll plan for that. But right now we have the enough capacity of the productions. We are right now utilizing 60% of our capacity. हमने नई कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी प्लानिंग ऑलरेडी कर लिया है सो जैसा आगे भी अर्लियर मैंने हर कॉन्फ्रेंस में बताता हूँ कि हम ज्यादा फोकस करना चाहते हैं ज्यादा मार्केट शेयर्स लेना चाहते हैं ये सिंगल प्रोडक्ट में सो अभी भी काफी कुछ प्लान बाकी है एंड यस वी विल यूटिलाइज दिस कैश फ्लो जो हमारे पास इतना रिजर्व पड़ा है तो डेफिनेटली आगे आने वाले 2 साल की जर्नी में आपको ये सब रिजल्ट दिखेगा अच्छा एक पॉइंट और तो अपना सब था प्लानिंग सब हो चुका है नाउ इम्प्लीमेंटेशन इज ओके थैंक यू एक पॉइंट ये था अपन काफी मेरे ख्याल से 3-4 क्वार्टर से लास्ट टाइम जब मिला था तब भी बात किया था अपन एनएससी पर लिस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कब तक लिस्ट करेंगे ऐसा क्या प्लान है मैनेजमेंट का एनएससी में लिस्ट होने के लिए गाइडलाइंस 75 करोड़ ऑफ नेटवर्थ विद इन 3 इयर्स कंटिन्यूस होना चाहिए सो हम लास्ट ईयर भी है तो आफ्टर 2 इयर्स वी कैन अप्लाई फॉर दैट एंड वी विल डेफिनेटली प्लान फॉर दैट ओके थैंक यू मेरे और भी क्वेरी है वो मैं लास्ट में आता हूँ ओके मनोज जी थैंक यू
We'll take the next question from Satvik Jain. Satvik, you can unmute and ask your questions. Good afternoon everyone. तो सर हमारी जैसे सेल्स हैं तो लास्ट 5-6 क्वार्टर्स में सेल्स इंक्रीज हो नहीं रही थी, तो इज इट बेसिकली ड्यू टू वन पार्ट इज द मार्केट हैज बीन स्लो एंड देन इज इट आल्सो दैट अदर प्लेयर्स एंड स्पेशली लाइक द लीडर दे हैव बिकम एग्रेसिव इन द मार्केट दैट वी आर नॉट बीइंग एबल टू पेनिट्रेट इनटू न्यूअर मार्केट्स? Not due to competition, because see, as you can see, पूरा जो मार्केट है वो काफी सभी इंडस्ट्रीज का डाउन है लास्ट 2 क्वार्टर से. But as I share, anyhow we have maintained that top line with a good bottom line. The reason behind we are not, पहले भी हमने कभी इस तरीके से बिजनेस नहीं किया, ना हम कर रहे हैं या ना हम आगे भी करेंगे, कि जहाँ पे सिर्फ हम प्राइमरी सेल पे फोकस करें और आगे जाके कोई डिस्टरबेंस हमारी चैनल्स में, हमारे चैनल पार्टनर्स या डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स में कोई क्रिएट हो. सो यस, ऑफ कोर्स मे बी वी आर स्लो इन टॉप लाइन, but we always try to maintain the good EBITDA with good penetrations. Always we believe that कि हमारी जो products है वहाँ से markets में वो नीचे से pull होना चाहिए, कारपेंटर में वो चीज़ पहुंचनी चाहिए और वहाँ से एक repeat orders आना चाहिए. तो yes, we are focusing right now in existing states. What we have already develop, हम जो कर चुके हैं वहाँ पे ज्यादा पेनिट्रेशन हम कर रहे हैं. लेकिन आगे जाके जब हमारे मैनेजमेंट में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट जब आएगा तो डेफिनेटली विद इन 2 or 3 क्वार्टर्स यू विल सी द टॉप लाइन इज आल्सो इंक्रीजिंग. सो पूरा नेटवर्क पूरा हमने सेट किया हुआ है. नाउ इट इज टाइम टू जस्ट गिव बूस्ट टू द मार्केट. राइट राइट सर. तो एंड एक लास्ट क्वेश्चन था. तो आई वाज सीइंग दैट रिसीवेबल्स हम ऑलरेडी काफी कम कर रहे हैं, कि सेल्स हमारी बढ़ रही है रिलेटिवली एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर वी आर आल्सो डिक्रीजिंग रिसीवेबल. तो फ्यूचर में भी यही प्लानिंग रहेगी कि कैश फ्लोज मेंटेन रखने, रिसीवेबल्स कम करने एंड फोकस ऑन फर्दर केपेक्स एक बार हम लोग 80-90% यूटिलाइजेशन पे चले जाते हैं? सी, जैसा मैंने बताया कि जो हमारे ऑलरेडी जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुके हैं वहाँ पे डेफिनेटली हम रिसीवेबल करना चाहेंगे. लेकिन आगे वाली जर्नी में जिस स्टेट्स में जहाँ पे हम डेवलप हमारी प्रोडक्ट करना चाहते हैं, आगे भी मोर पेनिट्रेशन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे शायद ऐसा हो सके कि शुरुआत के पीरियड्स में रिसीवेबल्स बढ़े. But yes, as we have experienced of this product, this market since 16-17 years, so we are very confident with our business model that we are not getting any disturbance regarding this. So जहाँ जहाँ पे भी ऐसा लगेगा हम डेफिनेटली हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और शायद हो सकता है कि वहाँ पे रिसीवेबल शुरुआत के टाइम पे बढ़े. But it will be a combo with जो टेरिटरी जहाँ पे हमारी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हो चुके हैं, और वहां से लेके हम जो वो प्रॉफिट है वो दूसरे स्टेट्स में डेफिनेटली शेयर करना चाहेंगे टू इंक्रीज द टॉप लाइन. तो ये कॉम्बो रहेगा स्ट्रेटेजी. थैंक यू सर. दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. We'll take the next question from Saket Saraugi. Saket, you can unmute and ask the question. Yeah. Thank you, sir. So actually, I had a question regarding the sales growth itself and over the margins also. As everybody has already asked regarding the sales growth part, I would like to know about the margin the company is getting now. Last year, if we see the PAT margin is almost doubled. It's now standing close to 25-26%. So I would like to know what has contributed to this margin growth, significant margin growth, and sustainability level of PAT level margins. What it should be? सी, पिछले 3 क्वार्टर में रो मटेरियल काफी डाउन हुए. दैट इज द मेन रीजन कि जहाँ पे हमारी बॉटम लाइन इतनी अच्छी ग्रो हुई है. सो लास्ट ईयर से जैसा आपने बताया ऑलमोस्ट डबल. सो वी कैन अचीव, वी आर एबल टू अचीव 33-35% ऑफ EBITDA मार्जिन. सो रो मटेरियल काफी कम हुए हैं और उसकी वजह से मार्जिन अच्छे. प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो टेरिटरीज हमारी अच्छे से डेवलप हुई है वहाँ पे हम हमारे जो प्रमोशंस, जो डिस्काउंट्स है
वगैरह जो पिछले 2-3 क्वार्टर में हम काफी कम कर पाए, तो वहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ी है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो हमारी है, जिसमें मार्जिन्स हमारे अच्छे, वो प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन ज्यादा बढ़ा है। तो दिस इज द मिक्स रीजन जहाँ पे हम हमारे ओवरहेड्स भी कम कर पाए और प्रॉफिट लाइन बढ़ा सके। So, like, sir, this the sales that we are having this year, it's down from last year. So, what would the volume level like compared to last year? It is more or less as same, I think, Vinay ji. We have shared the data. Yeah. Year on year, our volume is flat. Quarter on quarter, our volume is up around 6%. Just one thing I'd like to know, like, suppose the prices of the raw materials have fallen significantly. So, does the company take price cuts, or how does the company? Because if there's such a gap, then it's a chances that a competition can come and decrease the prices of their product. So, how do we take these things like? See, as if we talk about the competitors, all companies are there के जो पहले से 4-5 सालों से कर रही है, you know that companies. But we believe always in the quality and service what we have delivered to customers. Customer जो loyalty है, that could be earned, right? We cannot buy that. So I don't think so कि only profit margin जो इतना बड़ा gap है और जो discount structure हम pass कर रहे हैं, that is the only reason for that. What quality we have maintained, what service we have maintained, that is the main factor, key factor. Our relationship between customers, our team's relationship. So these all matters. And yes, of course कि maybe अगर आगे जाके price अगर reduce भी होते हैं in price value, तो भी हम I think 25% EBITDA margin हम maintain कर पाएंगे. That is, we are very confident with that. Thank you so much. We take the next question from Balakrishnan. So I have one question on the carpenter line. So I think for 2-3 quarters, more than 2-3 quarters, we are just seeing that the number of dealers and number of carpenters is not changed at all, even though we are trying to expand the regions and penetrating the existing market. So is there any reason why we are not seeing increased carpenters and dealers network? We have already increased our dealer networks, but still not we have updated the numbers, I can say, because we are now coming with the proper professional strategy branding. So within 2-3 months, you will see the difference of the numbers, and we have not updated that because it's an ongoing process. If right now we are penetrating on some in some states, UP or Delhi, so it's a process that we are appointing dealers daily to daily base. Maybe 20 dealers, 25 dealers, 30 dealers, they are adding to our portfolio. So it will be a difference you will see in the next quarter के जहाँ पे हम पूरे एक अलग नंबर के साथ आएंगे. If I talk about the carpenters, so we are right now registering the carpenters into our loyalty programs. So that is also in process. So we want to share the numbers that after some difference of that quantity. So we will see the difference within after 1 quarter. Okay, yeah, that's it from my side. We take the next question from Harish Shah. Harish, you can unmute and ask your question. Hello. Yes, Harish, please go ahead. Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon. भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंपनी की एक्सपोर्ट सेगमेंट में क्या प्लानिंग है अगले 3 साल में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री या जो भी वहां पर पोटेंशियल है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी का प्लानिंग. मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया है कि अभी के आप इंडस्ट्रीज में अगर देखोगे तो लास्ट 2 क्वार्टर से जो कंपनियों का सिर्फ एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी था,
वहाँ पे उनका टॉप लाइन काफी कुछ हिट हुआ है ड्यू टू दिस रिसेशंस एंड वगैरह। एंड दैट इज द रीजन के जहाँ पे डोमेस्टिकली ऐसा देखने जाए तो इंडिया का खुद का कंजम्पशन इतना बड़ा है, तो यहाँ पे उतना हिट नहीं हुआ है। तो मैं ये जर्नी को ही कंसिस्टेंट आगे लेना चाहूंगा। उसका रीजन ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत मार्केट शेयर्स है कि जो हमको अचीव करना है। एटलीस्ट 1,000 करोड़ ऑफ टॉप लाइन वी आर नॉट थिंकिंग फॉर एनी अदर प्रोडक्ट्स और एनी अदर एक्सपोर्ट मार्केट्स। ओके वी वांट टू डू विद इन इंडिया बिकॉज आज 6,000 करोड़ का मार्केट जो ऑलरेडी पीडी लाइट कर रहा है, तो वी वांट टू अचीव दैट एटलीस्ट 1,000 करोड़ ऑफ मार्केट शेयर फॉर। डेफिनेटली सर, मुझसे मोर देन ट्वाइस थ्राइस हो सकता है। आई सी द वेरी मच पोटेंशियल इन इंडिया एज वेल एज अगले 3 साल में भी। आई वुड से कि अभी वॉर सिचुएशन है, तो डेफिनेटली आफ्टर 3 इयर्स डिमांड बढ़ेगी, वॉर ओवर हो जाएगा, रीडेवलपमेंट वर्क आ जाएगा। फॉर दैट टाइम आई होप कि आप एक्सपोर्ट का भी प्रोजेक्शन अभी से शुरू कर दे। एज अ शेयर होल्डर आई विल से दैट। ओके, थैंक यू, माय क्वेश्चन इज ओवर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। We take the next question from Puneet Bhardwaj. Puneet, you can unmute and answer to that. गुड आफ्टरनून सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड सर आफ्टरनून। जैसे कि सर अपन हर 2 से 3 साल में अपना कैपेसिटी डबल करने का प्रोजेक्शन रखते हैं। जैसे अपन ने 17, 19 एंड 22 में डबल कर रहे हैं, तो क्या अभी अपना 24 में भी डबल करने का कोई केपेक्स प्लान है? Right now, we have enough capacity to grow more. And yes, definitely we'll plan, but not in 2024, but we'll start from 2025. हमारी कैपेसिटी डबल करने का प्रोजेक्शंस वो टाइम पे लेंगे, शायद ग्रीन फील्ड करे या ब्राउन फील्ड, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस ऑफ द टेरिटरीज एट दैट टाइम। बट यस, वी विल प्लान इन 2025। सर जैसे अपन देख पा रहे हैं अपना पार्ट मार्जिन अराउंड 24-25% चल रहा है। कंपेयरिंग टू इंडस्ट्री लीडर पिडीलाइट, क्या हम कुछ केमिकल्स में या जो प्रोडक्शन क्वालिटी है उसमें हम कुछ वेरिएशन लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा पैट मार्जिन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री लीडर? नहीं, सी पे एज अ पिडीलाइट अगर आप देखने चाहे तो देयर आर वेरियस ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू द बैलेंस शीट्स, सो we cannot compare that because as a Pidilite they have more than 400 products. So ये जो हमारी products है that is only white glue. But yes, already मैंने जैसे बताया कि raw materials जो down हुए हैं, that is the main reason कि जहाँ पे इतना margin हमारा आ रहा है। एंड बाकी का मार्जिन भी जैसा मैंने आपको बताया कि जब प्रोडक्ट खुद स्ट्रांग होती है, प्रोडक्ट में रिपीट ऑर्डर्स आते हैं, प्रोडक्ट का कंजप्शन बढ़ता है, तो ऑब्वियसली एक रिपीट बिजनेस का प्रॉफिट्स अलग ही होता है ओनली फॉर द कंपेयर टू प्राइमरी बिजनेस। सो यस, वो चीज भी है। सर जैसे कि आपने अभी पहले भी बताया, Hello. हेलो। I think, yeah, Puneet, go ahead. कि सर जैसे कि अभी अपन देख पा रहे हैं कि आप अभी नए स्टेट्स में एंटर कर रहे हैं, और जो अभी आपने बताया भी जैसे कि कारपेंटर का नंबर अभी आप लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया, जो काफ़ी मेरे मेरे अनुमान के हिसाब से काफ़ी बढ़ गया होगा। मगर क्या हम जान सकते हैं कि जैसे आपने लास्ट नंबर दिया था 2021 में जो था 3 लाख कारपेंटर्स के आसपास, तो अभी हम मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना एडिशन कर रहे हैं कारपेंटर्स में? करीबन 20 to 30% हमने बढ़ाया है वो फिगर से। सो वी आर क्लोज टू रीच 4 लाख कारपेंटर्स। थैंक यू सर, दैट्स ऑल फॉर माय साइड। थैंक यू। Manoj, please go ahead. हाँ, एक उत्कर्ष जी ने आपने शुरुआत में बोला था कि इस क्वार्टर में हमारा जो प्रेशर रहा था टॉप लाइन में
मानसून के कारण वगैरह वगैरह कुछ और भी कारण रहे हैं। तो अभी जो ये क्वार्टर है जो अक्टूबर से शुरू हुआ है और इसमें दीपावली भी है और बाकी फेस्टिवल भी है, तो अपना ऑर्डर इनफ्लो कैसा है सर? वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर Q3 एंड Q4, क्योंकि ऑल ओवर देखने जाए तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में Q3 Q4 की डिमांड ऑलवेज ज्यादा रहती है, एज यू कैन गो विद द हिस्ट्री। तो यस, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक विद द Q3 एंड स्पेशली फॉर Q4, because in a Q1 अगर देखने चाहे तो practically we need to understand the markets in Q1. April and May month, that is a migration period of the laborers पूरे इंडिया से कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, यानी मतलब जो राजस्थान यूपी से लोग हैं वो टूवर्ड्स मैरिजेस, शादी वगैरह जो होते हैं वहां पे मई मंथ में जाते हैं, तो ऑलवेज Q1 थोड़ा सॉफ्ट रहता है, Q2 बिकॉज ऑफ द मॉनसून एंड फेस्टिवल्स, ऑगस्ट मंथ्स, महाराष्ट्र में गणेश आ गया और पैन इंडिया भी वो फेस्टिवल्स चलते हैं, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। एज कम्पेयर टू, यू कैन सी दैट इज अ टोटल 40 to 45% एंड 65% अराउंड Q3 Q4। मेरा अगला पॉइंट मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, पर एक पॉइंट ये है उत्कर्ष जी, अपना सितंबर में जो एजीएम था, पहले एजीएम अपना फिजिकल होना था और I was very excited that I would come the way every time I come. I thought that I will have the opportunity to meet you and Jagdish जी, but suddenly आपने उसको वर्चुअल कर दिया, तो मेरे को थोड़ा वो डिसपॉइंटेड किया, आपसे मिल नहीं पाया। तो मैं I thought that I must share this with you. You are most welcome anytime. I know that. I know that. Okay, sir. Thank you for this is what from my side. Wish you all the very best. Thank you. To you and your new team, Thank you, Mr. Manoj. Thakkar particularly. Thank you, Manoj. We'll take the next question from Rajiv. Rajiv, you can unmute and ask your question. Good afternoon, sir. I have a few sets of questions. First being, can you throw some light on the size of white glue market and your focus area? व्हाइट ग्लू मार्केट में रिटेल, डोमेस्टिक रिटेल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो कम से कम वो 7,000 करोड़ का मार्केट है, और वो आई थिंक 7 to 10% से इंडस्ट्री ग्रो भी हो रही है, एंड सेम उतना ही मार्केट करीबन एटलीस्ट 40%, सो 4,000 to 5,000 करोड़ का मार्केट इंडस्ट्रियल मार्केट है, ओईएम्स के, जहाँ पे कोल्ड प्रेस, हॉट प्रेस यूनिट्स, फर्नीचर मेकर्स, so कम से कम 10,000 crore of market. Okay. Next is like you have 88 crores of cash and cash equivalent. Any plans on increasing and dividend payouts this year, considering you have such huge cash reserve? As a yes, as a dividend आप देख रहे हो कि एटलीस्ट हम पिछले 3 साल से कंटिन्यूअस डिविडेंड कर रहे हैं पे आउट, तो यस, वी विल डेफिनेटली प्लानिंग टू कंटिन्यू विद दैट। Okay, and regarding my actually third question is, you have been guiding at 50 to 60% capacity. So are you anywhere planning to increase it by 90 or 80%? जैसे हमने जो अदर स्टेट्स का भी प्लानिंग किया है कि जहाँ पे हम ज्यादा हमारी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे ही हम ये विड्थ कर पाएंगे तो हम हमारी ये कैपेसिटी हम यूटिलाइज कर पाएंगे। सो विद इन मोर 2-3 क्वार्टर्स में हमारे प्लान है कि जहाँ पे हम ये कैपेसिटी यूटिलाइज कर पाए। सो हमने पूरा बैक सपोर्ट रेडी रखा है कि जिसकी वजह से आगे जाके हमको कोई डिस्टर्बेंस ना रहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। Thank you, sir. Thanks, Rajiv. We'll take the next question from Saket. Saket, you can unmute and ask your questions. Actually, I have one more question regarding the product side. Like, as of now, what I've seen is 6-7 products the company is operating. So, suppose 2-3 years down the line, what kind of product range the company is planning, or can you give some guideline into about that in future? What kind of product range company is looking for? सी, हमने वाइट ग्लू के हिसाब से पूरी एंटायर रेंज हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर रखी है, तो जहाँ पे जो जो भी एप्लीकेशंस, जो जो भी रिक्वायरमेंट्स कारपेंटर्स की रहती है,
यूजर्स की, वो हमने ऑलरेडी हमारे पास सभी प्रोडक्ट्स है। तो जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी ये इतना 6,000 करोड़ का रिटेल मार्केट है, 4,000 करोड़ का ओईएम्स मार्केट है। तो हम इसी मार्केट में, इसी प्रोडक्ट में हमारा शेयर्स आगे ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्लान करना चाहिए कि कोई एडिशनल प्रोडक्ट्स बास्केट में ऐड करके फोकस डाइवर्ट किया जाए। फोकस इज अवर स्ट्रेंथ, सो वी वांट टू कंटिन्यू विद दिस स्ट्रेंथ। Okay, sir. Thank you. We'll take the next question from Puneet Bhardwaj. सर जैसे कि जो इंडस्ट्री लीडर जो पिडिलाइट है, उसका अपने वाइट ग्लू प्राइसेस में और पिडिलाइट के वाइट ग्लू प्राइसेस में 2018 2019 के आसपास 30-35% का डिफरेंस रहता था, जो अभी बढ़ के सॉरी, कैसे बता रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जो अपना रिटेल प्राइस था आज से 5 इयर्स डाउन द लाइन, 5 इयर्स पहले अपने प्राइस में और पिडिलाइट इंडस्ट्री लीडर के प्राइसेस में 30-35% का डिफरेंस रहता था, जो कि अभी एक्सपैंड होके 50% के आसपास आ गया है। तो हमें कुछ मतलब ये मैं प्राइस नहीं हाइक लेने, समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अ, सर मतलब अ, बेसिक क्वेश्चन ये है कि कोई प्राइस हाइक लेने का कंपनी सोच रहा है, मतलब नहीं, मार्जिन्स ऐसे एक्सपैंड करने देखने के। जाए तो ऑल ओवर हम प्राइस, नहीं, प्राइस में देखने जाए तो मे बी देयर इज सम misunderstanding with the data, because as earlier we were also same with the pricing point of view, the Pidilite, but we have the good discount structures compared to that. और So सर जो हमने 25% का गाइडेंस दिया है, उस पर हम मेंटेन कर रहे EBITDA, हैं। यस सर। हाँ, ट्वेंटी एंड टॉप लाइन फाइव ग्रोथ अगेन, परसेंट का EBITDA हम मेंटेन कर पाएंगे। एंड 25% हम टॉप लाइन ग्रोथ की बात कर रहे थे सर। यस, जैसा मैंने आपको बताया कि क्वार्टर 3, हाँ, जैसे मैंने बताया कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के लिए हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि ये जो क्वार्टर से ऑलवेज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में उसका पुश हमको मिलता है। तो यस, वी हैव द प्लान टू गेट एटलीस्ट 20-25% ऑफ टॉप लाइन हम बढ़ा पाए। थैंक यू वेरी मच सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू। We take the next question from Umesh Gupta. Yeah. Hi. Just to follow up on the previous question, जो भी आपने बोला 20-25% growth for the next 2 quarters. So ये आप बोल रहे हैं next 2 quarters के लिए या फिर full year FY24 के लिए 20-25% growth? नहीं, प्लानिंग तो पूरा FY24 के लिए ही है, और हमारी मेहनत, हमारे एफर्ट्स वही डायरेक्शंस में लगेंगे। एनी हाउ Q1 and Q2 was softened, as you know that, but we are optimistic with the Q3 and Q4, क्योंकि ऑलवेज एक जंप यहाँ पे हमको मिलता है, और जो नेटवर्क हमने एस्टेब्लिश किया है वहाँ पे वी हैव प्लान टू अचीव दैट करके। बट लेट्स सी किस तरीके का मार्केट जा रहा है करके। अदरवाइज I'm very optimistic with the domestic market of India. तो उसमें तो अगर देखें तो मोटा मोटा आपको लगभग 50-60% ग्रो करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 2 quarters टू अचीव 20। हाँ, सही बात है, सही बात है। प्रैक्टिकली वो देखने चाहिए, लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम ग्रो करना चाहेंगे, लेकिन कोई ऐसी कॉस्ट पे नहीं कि जहाँ पे कोई हम ऐसे कोई बैडली ब्लीड हो जाए मार्जिन में, या कोई और कोई परेशानी आ जाए। विल ग्रो विथ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी प्रोसेस, वी कैन से। Okay, thanks. And the other question was on now the Mr. with the Milan Thakkar coming on board. So first in the presentation you have mentioned that you have hired someone as Chief Operating Officer. So is that someone else other than Mr. Milan Thakkar? Because I think Milan Thakkar you mentioned he has joined as a CEO. So you have hired a CEO and COO both. We have hired Milan Thakkar has joined us with the CEO positions, and that is the same person what we are talking about. Okay, so maybe in your presentation there is a mistake because you have mentioned it COO. Anyways, so my question was that now with Mr. Milan Thakkar joining company, so between you and Mr. Milan Thakkar, how are you going to divide responsibilities in terms of
or have you kind of figured out that Mr. Thakkar will be responsible for either the growth of the company or the operations of the company, or both of you will jointly do everything together? Or have you kind of figured out some understanding with Mr. Thakkar that how both of you are going to take forward this company? See, it's a very good question. I like to share with you some thoughts of mine. I think Thakkar has very good experience of 20, very professional, and he has a vast experience. So definitely उनका experience भी हमारी जर्नी में काम आएगा. मैं काफी कुछ उनसे सीखूंगा. प्लस हमारा जो 17 years का जो experience जो white glue में है, तो वो भी एक सपोर्टिंग स्ट्रेंथ मिलन जी के रहेगा. तो आई थिंक एक कॉम्बो जो है टुगेदर विल डू बेटर ग्रोथ. व्हाट डू यू से मिलन जी? Absolutely, absolutely, Utkarsh bhai. I think just to Umesh ji, just to respond specifically to your question. See, roles and responsibilities over time, there is a lot I have to learn from the industry. In the industry, I come from the construction background as well, and I have contributed heavily to the industry. So overall, roles and responsibility, may operationally involvement will take a little while for transition, but operationally I will be driving, and Utkarji will be guiding us, with his heavy experience in the white glue space, and that's how we will evolve together as a team. There will be a fine tuning which we will be done over course of time. Just to give you a little snapshot of Meji, but it will definitely be a win-win. You will see some, good results in course of time once I integrate. उत्कर्ष जी ने मुझे थोड़ा समय दिया है इंटीग्रेट करने के लिए, so I think I will get the ball rolling very soon, and let the results talk, and not be. Yeah, thank you, Umesh ji. I hope it addresses what your question is, please. No, that's really helpful. Thank you, Mr. Thakkar and Utkarsh ji. The other thing I wanted to understand from a management transition perspective, is there any ESOP plan for Mr. Thakkar, or I mean, what is the, or maybe I can ask directly to Mr. Thakkar also, that what exactly did you see when you moved from another, you were CEO in another company and you moved from that company to here? So what is it that excites you about joining a smaller, I don't know what size of that company was, but even Jyoti Resins is quite small from a stock market perspective in terms of market cap, in terms of size. So what is that which excites you about joining this company, and what do you see for yourself in this company in the next 3, 4, 5 years? Firstly, it's that the size is what excites me. And I've been a part of growth stories in the past, and with 300% growth, which I gave to my last organization in my stint of 7 years. So I think that is exciting. Second is, I see a more passionate professional in Utkarji than me. So I think that is what I am joining, is Utkarji's passion and vision for the white glue space. And the overall 10,000 crore market, we have just hit the tip of the iceberg, and there's a lot of penetration to be done. And I see a huge potential of penetrating the market, and ensuring that we all grow together. Umesh bhai, that is what, if I were to give you a snapshot, is the potential is humongous, and the vision is very, very, very vast of Utkarsh bhai, which is what I'm joining. Great. Thank you so much. Wish you all the best for a rewarding career in Jyoti. Thank you, Umesh. Thank you so much. Thanks, Umesh. We'll take the next question from Binoy Jariwala. He's unable to raise his hand. Binoy, you can unmute and ask your questions. Am I audible? Yes. Okay. Thank you for the opportunity. Utkarsh, just a few questions from my end. Your carpenter loyalty program that you've rolled out, has it been rolled out across all the 13 territories, or it is only in certain states? Almost it is. Right now we have launched in all the states, but it is in process. Still a lot to do with this loyalty program. Registration प्रोसेस जो है वो ऑनगोइंग है और काफी कुछ अभी बाकी है, और जो नए स्टेट्स की जो बात करें वहां पे तो काफी कुछ काम बाकी है.
तो आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि वी हैव द प्लान फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर, 1.5 साल में हमको काफी सारे कारपेंटर्स ये प्लेटफॉर्म पे लाने हैं. एंड वी आर इंक्रीजिंग बैक ऑफिस टीम ऑल्सो, वी आर इंक्रीजिंग द प्रमोशन टीम ऑल्सो. सो आई थिंक 1.5 साल के अंदर में बहुत बदलाव आएगा. सो एसेंशियली आप बोल रहे हो कि आपने लॉन्च अक्रॉस कर दिया है सभी स्टेट्स के, लेकिन पूरा पेनिट्रेट नहीं किया है. It is in process, so it's not an overnight journey, but हमने लॉन्च पूरा कर दिया है, यस, सभी स्टेट्स में. ओके. टोटल आपने बोला लगभग आप यू रीच रफली अबाउट 4 लाख कारपेंटर्स. तो ये जो स्टेट्स में आपके आपके प्रेजेंस है, तो कुछ स्टडी वगैरह या कुछ डेटा आपने फिगर आउट किया है कि टोटल पोटेंशियल कारपेंटर्स जो आप पहुंच सकते हो वो कितना है? सी, जो 3 lakhs कारपेंटर्स का हम नेटवर्क जो बता रहे हैं, दैट डेटा वी हैव ऑलरेडी. एंड उतने कारपेंटर की मीट्स, उतने कारपेंटर का गैदरिंग प्रमोशन हम पिछले 17 सालों में कर चुके हैं. एंड यस, ऑफ कोर्स, काफी कुछ ऐसे डेटास है कि जहाँ पे उतना पोटेंशियल हमारा नहीं आया है. एंड द रीजन बिहाइंड दैट मे बी अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर दैट विलेजेस और छोटे टाउन्स वगैरह जो रहते हैं. बट वी हैव द डेटा एंड वी हैव द टीम व्हाट वी हैव एस्टैब्लिश के जहाँ पे हम हमारी प्रमोशंस की टीम हमने अभी छोटे छोटे टाउन के अंदर भी हमने बढ़ा दिए. So we want to penetrate more into metro mega cities also, and we'll go for the town and villages also. So rural urban दोनों एरिया हम कवर अप कर रहे हैं. सो विद इन हमारा प्लान ऐसा है कि 1.5 साल के अंदर में ही हम 4 लाख कारपेंटर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, और वो जो डेटा है उसके ऊपर के वर्किंग करके हम काफी सारा आउटपुट उसमें से ले पाए. सो एसेंशियली आप बोल रहे हो कि ये 4 लाख को इंक्रीज करने का आपका कोई प्लान नहीं है. बेसिकली यू हैव टू सर्विस ये 4 लाख आपको बेहतर करना है या पेनिट्रेट बेहतर करना Yes, it's a very very huge number. It's a very huge number. है. अच्छा. इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर. और अगर यही कारपेंटर्स में ज्यादा सर्विस, डेफिनेटली सर्विस तो मैटर करेगी ही. तो इसमें ज्यादा पेनिट्रेट करके हम मोर हमारी क्वालिटी और सर्विस देना चाहेंगे. एंड इट विल इम्पैक्ट ऑन आवर रेवेन्यू आल्सो. अच्छा, और ये 4 लाख कारपेंटर में से कितने हमारे जो कोर स्टेट्स है उसमें कितने होंगे? ये थोड़ा कम्पिटिटिव, इतना डिटेल डेटा सॉरी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा. Fair enough, fair enough, fair enough. Uh, a couple of questions on the data, I mean, on the balance sheet and the P&L. Can you help me with the exact volume for Q2 FY24 and Q2 FY23, the sales volume, please? Binoy, we wish to refrain from giving specific volume data due to competitive reasons. Okay, okay. Yeah, but like we've already indicated that in volume terms, we've grown around 5 to 6% quarter on quarter, and we've been flattish year on year. Understood. Okay, fair enough. And another point on the financials was what would be the total carpenter loyalty points in the current liabilities in the balance sheet? If you see the balance sheet, this time we have reclassified it. We've divided into current and non-current, right? So the current is the one which is less than 1 year, which can potentially come up for redemption. And the non-current is the one which is above 1 year. Sunil Maluji, would you like to elaborate on that, please? Yes, please. So if we go through the balance sheet of Q2, Vinay ji said the bifurcation is into current and non-current. The non-current portion of the liability stands at 49.62 crores. And other financial liability, current part is approximately 38 crore, which includes the rewards related liabilities and all that. That we expect in the coming. So totally put together, it's roughly about 88 crores. So of this 88, sorry? Yes, roughly 88 crore. So this entire 88 crore pertains to the carpenter loyalty points, right? 90% of this pertains to carpenter loyalty program, and difference is the other smaller liabilities.
No, I think he's trying to ask is, so 70 to 75% is towards carpenter loyalty program and 25% is toward dealer loyalty program. To dealer. Yes, Okay. yes. You're right. Understood. Okay. Okay, that's all from my side. Thank you so much. Thank you. We'll take the next question from Chinmay. Chinmay, you can unmute and ask your question. Hi, and first of all, congratulations for the good set of numbers. So in this quarter's result, we have seen the material cost has gone down significantly, like from 40 crores to 19 crores on YY basis. So is it, and I think it is mainly because of the sharp decline in the raw material prices. So I just want to know what are the major raw materials that we use? No, sorry, can you repeat the first part? Because it's not gone up, it's gone down. Yeah, it has gone down significantly from 40 crores to 19 crores on year basis. Right. So that is monomers. It's vinyl acetate monomers. That is the key raw material of the product. Okay. And since when the prices were going up, so were we transferring that price to end users? Yes, we have increased our sales promotion discounts programs जो है loyalty points वगैरह है premium products में है वो हमने increase किया है तो yes we have passed on to the carpenters to get the more loyalty of them. Okay, and since now the raw material prices are again declining, so are we planning to like lower the cost of the product and pass it to the end customer, or is it going to be the same price as it is? We'll go with the industry strategies for that reason कि जहाँ पे Pidilite है अदर स्पेयर्स है तो इंडस्ट्रीज का जैसे एक फ्लो रहेगा हम वो फ्लो में डिसीजंस लेंगे सो वी विल नॉट और मतलब वो नहीं करेंगे करके कि जहाँ पे कोई ऐसा डिस्टरबेंस ट्रेड के लेवल पे रिटेलर्स को या हमारे जो लॉयल कारपेंटर्स थे उनको आए. So like is So it we'll go with it is a collective decision of the entire industry? Yes. Okay. Thank you so much. That's it from my side. We'll take the next question from Manoj. Manoj, can you unmute? या उत्कर्ष जी मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो उसका अपन को असर पड़ता है क्या रॉ मटेरियल में, एक तो ये, और उसी से रिलेटेड ये है कि अभी जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या यूक्रेन और रशिया का है वो अपने को कहीं सप्लाई चेन में पर्टिकुलरली फ्रॉम द रॉ मटेरियल पर्सपेक्टिव प्रोक्योरमेंट करने में कुछ प्रेशर आता है क्या उसका, ये थोड़ा आप हमें समझाने की कोशिश करें तो. लास्ट ईयर जब यूक्रेन और रशिया का हुआ था तो इफेक्ट आया था और क्रूड के रिगार्डिंग भी देखने जाए तो सी दिस इज ये टोटली इंपोर्टेड मटेरियल्स है तो हाँ कोई भी इंटरनेशनली अगर डिमांड एंड सप्लाई का कोई पोजीशंस वहां पे बनता है तो इफेक्ट आता है बट दैट इज ऑल्सो द इफेक्ट इन डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई ऑल्सो. आज अगर मानो कि इंपोर्ट ज्यादा है और डोमेस्टिकली डिमांड कम है तो क्रूड का इफेक्ट नहीं आता है लेकिन अगर डिमांड ज्यादा है तो ये प्रोक्योरमेंट में कैसा है कि ये हम हमारे जो इम्पोर्टर्स है उसके बिहाफ पे हम करवाते हैं हमारे बिहाफ पे वो लोग करते हैं इम्पोर्ट तो यस जैसा हमको प्राइसिंग में अगर अच्छा कोई बेनिफिट्स मिल रहा है तो वी प्रोक्योर द मटेरियल्स और इन्वेंटरी हम हमारी बढ़ाते हैं. So that is depends upon the situations of the market. Okay, thank you, Utkarsh ji, and wish you all the very best. Thank you. So since there are no further questions, we'll bring an end to the conference call. Would you like to add some closing comments? बस जैसा मैंने बताया कि we are very optimistic for the Q3 and Q4. So और आगे जाके हम हमारी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी वो भी हम 2025 तक प्लान कर रहे हैं. So wish us luck. हमारे एफर्ट्स से ज्यादा रहेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी टीम बहुत अच्छे से आगे बढ़े और ये ब्रांड को बहुत आगे ले जाए. Thank you all of you. Thank you so much, sir, and thank you to all the participants for joining on the call.
We'll now end the conference call. Thank you.